Jaya Vishnupad Paramahamsa Parivjagacharya Ashtottara Shri Srimad Srila Abhay Charananda Bhakti Vedanta Sai Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Thakur Haridas Ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना मई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी रानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इस्कॉन डीवीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। गौ प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you everyone for coming. Very honored to be here tonight and continue our seminar on Vaishnava culture and etiquette. आप सभी का आज इस कक्षा में आने के लिए स्वागत है। हम अपना जो वैष्णव सदाचार का जो सेमिनार है वो प्रारंभ करेंगे। I will have to speak in English. I apologize in advance. मुझे अंग्रेजी में बोलना होगा, उसके लिए कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आप अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर सकते हैं या साइलेंट मोड पे कर सकते हैं। So we'll begin with Mangalacharana. Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Lalita Sahagana Raghunathan Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindho Dinapantho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Last night we heard a little bit about, in the abstract, we heard about culture generally. कल रात में जो सेमिनार हुआ था उसमें हमने कुछ Sadharana dharma, apad dharma, rajanya dharma, or Vaishnava dharma. That when there's any question of dharma, we're not sure what to do and what not to do, we can even refer to the activities of
those who are shishtas or fully trained up human beings. कल हमने चर्चा किया था कि जब कभी धर्म की बात आती है और हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, तो जो पूरी तरह से शिष्ट लोग. Important topic that Srila Prabhupada said when asked, how shall we recognize a pure devotee? ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी से ये पूछा गया कि आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन भक्त है. Srila Prabhupada ने कहा उत्तर दिया कि he will be a perfect gentleman. तो श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि वो एक पूरी तरह से सभ्य मनुष्य होंगे. If you want an example of that, one example that I know of in 2019 is His Holiness Bhakti Charu Swami. अगर आप कोई उदाहरण इस तरह से देखना चाहते हैं तो इस समय हम देख सकते हैं श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज. One of my god brothers whom Srila Prabhupada loved very much. जो कि प्रभुजी के एक गुरु भाई हैं और श्री प्रभुपाद उनको बहुत तरीके से वैष्णव कार्य करते हैं. In the 11th canto of Srimad Bhagavatam, Krishna is discussing transcendental knowledge, and he tells Uddhava how to distinguish what is true and what is untrue in this relative world, which is so confusing. 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से बताते हैं, दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं, और वो ये बताते हैं कि इस समाज में ये कैसे पता करना चाहिए क्या सत्य है और क्या असत्य है. Those of us who are hopefully civilized human beings, or at least trying to become self-realized, we have a problem. जो भी सभ्य समाज में सभ्य जीवन जीना चाहते हैं या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये सोचने की बात है. The problem is that we live in two worlds at once. यहाँ पे एक समस्या है कि हम लोग दो प्रकार के संसार में एक साथ रहते हैं. We have one foot in the material world with our material affairs that we have to manage, and we have another foot, we hope we're stepping into the spiritual world as well. हमारा एक पैर भौतिक जीवन में है जहाँ पे भौतिक कार्यकलाप भी हैं जो हमें करने पड़ते हैं, और दूसरा पैर हमारा आध्यात्मिक जीवन में है. This is the problem of the sadhaka, the aspiring Vaishnavas. ये साधक या जो कि वैष्णव बनना चाहते हैं उनके लिए एक समस्या है. It's a problem because this world can be a very confusing place. ये समस्या इसलिए है क्योंकि ये संसार कई बार बहुत भ्रामक संसार जैसा है, भ्रमित कर सकता है. This is the context in which Krishna gave this instruction to Uddhava in the 11th canto. 11वें स्कंद में इसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण ने उद्धव को ये संदेश दिया था. So normally we hear, for understanding spiritual life, there are three things that are important. 3 pramanas, we say. आध्यात्मिक जीवन में हम आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए 3 प्रमाण आवश्यक हैं. Within the last 30 or 40 years, I have seen increasingly that Hinduism is becoming more and more, well, people are less and less Hindus every year, it seems. There are less and less Hindu every year. पिछले 30-40 सालों में मैंने एक बात देखा है कि हिंदू धर्म को मानने वाले कम होते जा रहे हैं. We did a program in a small village in Tamil Nadu some years ago. कुछ साल पहले हमने तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक कार्यक्रम किया था. 30 or 40 curious villagers came to listen in the beginning. प्रारंभ में 30 या 40 गांव के जो लोग थे वो सुनने के लिए आए. By the end of the program, the crowd had swelled to 200 or 300 people, and they were completely attentive. और प्रोग्राम जब तक चलता रहा और प्रोग्राम के खत्म होने तक कम से कम 200-300 लोग थे जो कि बहुत ध्यान से सुन रहे थे. One man came forward and he asked, "We've never heard these things before." एक व्यक्ति उसी कार्यक्रम में सामने आया और उसने बोला कि हमने तो ये चीजें पहले कभी नहीं सुनी थी. We're Hindus. We want to be Hindus, but no one has ever told us what does it mean to be a Hindu. हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहना भी चाहते हैं, परंतु आज तक कभी किसी ने हमें आके बताया नहीं कि हिंदू का क्या मतलब होता है. So Hinduism has lost sight of this very important aspect of Hindu darshan, which is called pramana. क्योंकि हिंदू समाज ने एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हिंदू दर्शन का महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रमाण, उसको खो दिया है. Praman means how do you know what you know?
प्रमाण का मतलब होता है कि आप किसी बात को किस तरह से समझते हैं। And Krishna mentions there are, well, normally we hear there are three of them. Shabda, hearing from authorities, that is the first one. भगवान श्री कृष्ण बताते हैं तीन प्रकार से मुख्यतः बताते हैं, उसमें से भी शब्द प्रमाण किसी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना। And it is also the best one because it is superior to all the others. और शब्द प्रमाण सबसे अच्छा होता है क्योंकि बाकी सभी प्रमाण से ये बहुत ऊंचा होता है। Anuman allows us to guess or speculate about things that we can't necessarily see. अनुमान हमें ये अनुभव देता है कि हम जो वस्तुएं नहीं देख पाते हैं उसको हम अपने मन से सोच सकते हैं उसके बारे में। But we may not be able to understand so much and we may make mistakes because we're flawed. परंतु हो सकता है हम उसको ज़्यादा समझ नहीं पाए और नहीं समझने के कारण गलती करें। Pratyaksha is the most tangible thing. We can see something, we can touch it, feel it, smell it, taste it. प्रत्यक्ष सबसे सामने देखने वाला वस्तु है, प्रमाण है, उसको हम उसमें हम चीजों को देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। But our senses are imperfect. पर हमारी इंद्रियां ही अपूर्ण हैं। If you have a disease, then you take sugar cane and it tastes bitter. अगर हम बीमार हैं और बीमारी की अवस्था में गन्ना खाते हैं, तो गन्ना जो है वो कड़वा लगता है। If you look at the sun, you can guess that it maybe is the same size as a small half paisa coin. अगर हम सूर्य की तरफ देखते हैं, तो हमें सूर्य एक छोटे से सिक्के के जैसा दिखाई देता है। And in the dark, you can't see anything at all. और जब अंधकार होता है, तो हम कुछ भी नहीं देख सकते। So although pratyaksha is the most immediate, direct mode of perception, it is also faulty. तो हम देखते हैं कि यद्यपि प्रत्यक्ष हमें सामने दिखाई देता है, परंतु कई बार वो त्रुटिपूर्ण, गलत भी होता है। Shabda, Anuman, Pratyaksha, and Krishna mentions to Uddhava a fourth pramana, and that is called Aitihyam. Aitihyam. तो शब्द, अनुमान और प्रत्यक्ष के अलावा भगवान श्री कृष्ण एक और प्रमाण, चतुर्थ प्रमाण बताते हैं, ऐतिह्यम। Does anyone know what Aitihyam means? इसका अर्थ आप में से कोई जानते हैं क्या? Do you have this word in Gujarati? Aitihyam. In Tamil they have this word, Aitihyam. It's a Sanskrit word. It means something that has occurred in the past, like itihasa. ऐतिह्यम इस शब्द, ये एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब है कि पहले ये घटना घट चुकी है। But in particular, the conventional definition of aitihyam is an assertion that cannot be proven or disproven, but you have received it from predecessors in the past. इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि ये पहले घटना हुई भी हो या नहीं भी हुई हो, परंतु आपने अपने पहले के लोगों से इसको प्राप्त किया है। So sadachara or shishtachara is of this nature. It is like aitihyam in that way. Traditional precedent, we may say. तो सदाचार या शिष्टाचार जो है वो पारंपरिक तरीके हैं जो हमें अपने पुराने लोगों से प्राप्त होते हैं। And the favorite example is the legal system. In the legal system, a lawyer may argue a case on the basis of a decision that was previously reached on a similar issue in the past. ये हम एक न्याय व्यवस्था के आधार पर समझ सकते हैं, जिस प्रकार से कानून के अंदर जो वकील होता है वो कभी पहले जो निर्णय हो चुका है उसी परिस्थिति में उसका आधार लेके इस बार भी निर्णय के लिए अपील कर सकता है। So in this same way, this aitihyam or shishtachara, it has become in itself a fourth pramana that allows us to help to understand things in this world. तो इस प्रकार से ये जो शिष्टाचार है ये अपने आप में एक प्रमाण है जिससे हम इस संसार में पता कर सकते हैं कि क्या सच्चाई है। And one small branch of this shishtachara is what we call Vaishnava etiquette. तो ये शिष्टाचार का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसको हम वैष्णव सदाचार कहते हैं। How do you translate etiquette into Gujarati? I'm not sure. एटिकेट को गुजराती भाषा में कैसे क्या बोलते हैं सदाचार को? Maybe. सदाचार। Shishtachar, sadachar, maryada, dharma, these ideas. Samskara, yeah, we discussed this last night. Same idea, samskara, yeah, something like that.
So this is very helpful. So how do we deal with one another as Vaishnavas? How do we deal with the Supreme Lord as Vaishnavas? How do we deal with the general public as Vaishnavas? वैष्णव के समान हम कैसे दूसरे भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे भगवान के साथ सामने व्यवहार करते हैं और कैसे समाज में सभी लोगों के सामने व्यवहार करते हैं. In the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, we also find very nice characterization of this process, described by description of different levels of adhikar that we have in this world. श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में बहुत अच्छे तरीके से ये बताया गया है हर व्यक्ति का क्या-क्या लक्षण है और क्या-क्या अधिकार है, वैष्णव का क्या-क्या अधिकार है. Nowadays, among those who are political, it is very popular to say that everyone is equal in this world. Democracy is founded on this ideal that we're all equal. इस संसार में जो राजनीति या लोकतंत्र जो पाया गया है वो इसी सिद्धांत पर बनाया गया है कि संसार में सभी लोग समान हैं. The politicians who espouse this so-called egalitarianism, so-called equality, they actually don't believe in it. जो संसार के जो नेता हैं, जो राजनीतिक हैं, वो वास्तविकता में इस शिष्टाचार को समझते नहीं हैं क्योंकि वो इस संसार में सबको समान समझते हैं. And neither does anyone else. No one else believes in it either. और उनके अलावा इस संसार के बाकी लोग भी इसको नहीं समझते. In other words, it's cheating. और ये जो है ये धोखा के समान है. The proof of this is that when it comes time to get your daughter married, you choose the very best person that you can find and not the very worst person with the assumption that they're all equal. कि इसमें ये गलती है कि अगर हमें कुछ विशेष सुविधाएं देनी होती है तो हम सबसे अच्छे व्यक्ति को चुनते हैं, नीचे वाले व्यक्ति को नहीं चुनते हैं, परंतु बोलने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि सब बराबर हैं. So the basis of higher and lower is called adhikar. A person's capacity or prerogative is a better word. तो कोई उच्च अवस्था में है और कोई निम्न अवस्था में है, इसी को उस व्यक्ति का अधिकार कहा जाता है. If a person is better than you, you humbly display humility and humbly submit to this person. अगर कोई व्यक्ति हमसे उच्च अवस्था में है, तो हमें विनम्रता प्राप्त करना चाहिए और उस व्यक्ति को के लिए समर्पण होना चाहिए. If a person is equal to you, then you befriend that person. अगर व्यक्ति आपके बराबर है, तो उससे उसके जैसा व्यवहार करना चाहिए. If a person is lower than you, then you show compassion on that person. अगर कोई व्यक्ति हमसे छोटा है, तो हमें उसके लिए दया भाव होना चाहिए. And if a person is envious, you avoid that person. अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है हमसे, तो हमें उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए. So that in itself is a big topic from Srimad Bhagavatam. Adhikar. We have three kinds: Kanishta Adhikar, Madhyam Adhikar, Uttama Adhikar. तो श्रीमद् भागवतम में ये अधिकार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा शीर्षक है जिसके ऊपर चर्चा की जा सकती है. The point that we're discussing tonight is how do we relate with one another as Vaishnavas, Vaishnava etiquette. आज हम जो चर्चा करेंगे कि हम एक दूसरे से कैसे व्यवहार करें वैष्णवों के समान. This is a question of ethics. ये एक नैतिकता का एक प्रश्न है. Okay. Yeah, we don't really have a word for ethics, I think, in Gujarati. The concept is not there because the need for a word was always fulfilled by another word called dharma. ये एथिक्स शब्द जो इंग्लिश में है उसका हो सकता है गुजराती में कोई शब्द नहीं हो क्योंकि धर्म शब्द से इसका तात्पर्य समझा जा सकता है. Yes, and its function was taken care of by dharma as well. और ये इस शब्द का जो मतलब है वो भी धर्म के अंदर ही सम्मिलित हो जाता है. Now, in ethics, we have different ways of dealing with conflicts that may arise in society. इस समाज के बीच में जो भी लड़ाइयाँ या लोगों के बीच में जो मनमुटाव होते हैं वो भी हम समझ सकते हैं इस सिद्धांत के आधार पर. Have you ever been in a conflict? आप में से कोई है जो कभी भी लड़ाई या मनमुटाव में फंसे हुए हैं इससे पहले? All of us come into conflict. हम सभी लोग किसी न किसी मनमुटाव या लड़ाई में फंसे हुए हैं. It is the predominant characteristic of this world. ये संसार का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है. Why is conflict so all pervasive in this world?
क्यों ये लड़ाइयाँ इस संसार में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं? Because everyone in this world is trying to be the supreme. क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति अपने आप को सबसे ऊपर बनाना चाहता है, सबसे ऊंचा बनना चाहता है। And unfortunately, that position is already filled by Bhagavan. और दुर्भाग्यपूर्ण ये वो जो स्थिति है, सबसे ऊंची स्थिति, वो भगवान के द्वारा पहले से ही प्राप्त हो चुकी है। So we have to figure out how to deal with all the other persons who are aspiring, like us, to become Bhagavan or to take his place. तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, हमें वो सबसे देखना पड़ता है कि भगवान की स्थिति, जो भी भगवान की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, हमारे जैसे उनसे हमें कैसे व्यवहार करना है। And so just as bamboos rubbing together in the forest sometimes create friction and thereby fire, so there are conflicts in this material world all the time. तो जिस तरह कभी जंगल में बांस की लकड़ी एक दूसरे से टकराते हैं और आग लग जाती है, उसी तरीके से इस संसार में जब सभी लोग सबसे ऊंचे बनना चाहते हैं तो उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। Some conflicts they arise through miscommunication. We misunderstand each other. कुछ लड़ाइयाँ होती हैं कि हम एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते। Some conflicts arise through competition for limited resources. कुछ लड़ाइयाँ होती हैं इस संसार के संसाधन ज़्यादा हैं परंतु लोग कम हैं, तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। Which give rise to envy. That gives rise to envy. हाँ, वो ईर्ष्या का कारण होता है। Does anyone recognize the name Kapila Vatsyayana? Kapila, not Kapil. Kapila. आप में से किसी ने कपिला वात्स्यायन इनको जानते हैं? She was a scholar. I think she must be dead now, but she was a scholar of aesthetics, rasa shastra. ये कपिला वात्स्यायन जो है, ये एक विद्वती थी रस शास्त्र में। Later on, she became a politician. और बाद में वो एक राजनेता बनी। But she said something very interesting. परंतु उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। Is everyone familiar with the term स्थायी भाव? आप में से सभी लोग क्या स्थायी भाव इस शब्द को जानते हैं? A rasik should understand this term. जो भी रस को जानते हैं, अलंकार को जानते हैं, वो इस शब्द को जानते होंगे। स्थायी भाव means the predominating characteristic of a given individual or thing. स्थायी भाव का मतलब होता है उस व्यक्ति या वस्तु का सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव। उसका प्रधान लक्षण, we can say. So उसने कहा कि भारतीय लोगों का स्थायी भाव ईर्ष्या ही है। तो प्रधान लक्षण उस विद्वती ने कहा कि भारतीय लोगों का स्थायी भाव ईर्ष्या है। So this is the problem in the material world. Therefore, it's not surprising we have conflicts all the time. तो ये इस संसार का लक्षण है, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है अगर इस संसार में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं। So miscommunication, conflict over limited resources, and finally another cause of conflict is a clash of value systems. तो इस तरीके से प्रतिस्पर्धा और संसाधनों की कमी, इसके अलावा एक और कारण है लड़ाइयों का कि लोगों का जो मापदंड है, क्या सही है क्या गलत है, वो सभी का अलग-अलग है। This is something we also see very frequently, even in 2019 ISKCON. ये हम कई बार 2019 में हमारे ISKCON संस्था के अंदर भी देख सकते हैं। It seems as if everything has crystallized into small little camps, and they're usually okay with one another, but sometimes there's competition and conflict, open or implicit. तो हर अलग-अलग समूह में लोग रहते हैं और ऐसे सामान्य रूप से समान तरीके से रहते हैं, परंतु छोटी-छोटी बातों पे उनके बीच में अलग-अलग उनके संबंध होते हैं। Sometimes there are disagreements over the meaning of Guru, Sadhu, Shastra. कई बार गुरु साधु शास्त्र ने क्या बताया है उसके ऊपर भी लोगों के अलग-अलग तर्क होते हैं। These are three divisions of the Shabda Pramana. शब्द प्रमाण को तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है, गुरु साधु और शास्त्र। An authoritative assertion comes from the Shastra ultimately. Shastra yonitvat. और अंततः शास्त्र जो है, शास्त्र योनित्वाद, मतलब शास्त्र जो है वही सबसे प्रामाणिक है। But Shastra cannot be interpreted directly by an ordinary person. परंतु चूंकि शास्त्र किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा पूर्णतः समझा नहीं जा सकता है। Generally, we need gurus to explain what does the Shastra intend.
इसलिए हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है ये समझने के लिए कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। The word tatparya, which we find throughout Srila Prabhupada's books, indicates the intention of the author. ये तात्पर्य शब्द जो कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में आता है, ये जो लेखक है उसके मन में क्या विचार है उसको बताता है। And a guru himself is also not independent. He has to represent a long-standing parampara, a disciplic succession of great sages and acharyas. और गुरु जो है वो भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे आचार्य हैं जिनकी परंपरा को गुरु को निभाना होता है। All three of them have to say the same thing. They have to be in harmony. तो ये तीनों गुरु साधु और शास्त्र समान होना चाहिए, एक ही वस्तु बतानी चाहिए। If the guru says something that is not in the shastra or parampara, then maybe he's not really a guru. अगर कोई गुरु ऐसी बात बताता है जो कि शास्त्र में भी नहीं है और परंपरा में भी नहीं है, तो वो व्यक्ति गुरु नहीं है। And if the shastra is coming from some place that no parampara, if there's some so-called shastra that no parampara recognizes, then maybe somebody made it up. That also happens. अगर कोई ऐसा शास्त्र है जिसको कोई भी आचार्य या कोई भी गुरु उसको नहीं समझते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो शास्त्र किसी ने बनाया हो। I've seen this happen because I used to be a scholar. मैंने इसको होते हुए देखा है, क्योंकि पहले मैं इस वैदिक विज्ञान का विद्वान के जैसा कार्य करता था। And we look for manuscripts of ancient works both in Sanskrit and vernacular. तो उस समय हम संस्कृत के जो पुराने जो हाथ से लिखे हुए तथ्य होते हैं शास्त्रों में, उसको हम देखते थे। Sometimes people forge manuscripts and pretend that they're old manuscripts recently discovered to give themselves prestige. कई बार लोग जो हाथ से लिखे हुए शास्त्र पहले रहते थे, कुछ लोग उसको नकली तरीके से बनाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत पुराना शास्त्र है, जिससे कि उनका जो इज्जत है वो समाज में बढ़ जाता है। And sometimes we even find sampradayas, but they're not mentioned in the shastra as well. कई बार हम ऐसे संप्रदाय भी देखते हैं जो कि शास्त्रों में नहीं लिखे हुए हैं। For example, the Padma Purana tells us of 4 bona fide sampradayas: Rudra Sampradaya, Brahma Sampradaya, Shri Sampradaya, Kumar Sampradaya. Other sampradayas, we don't know. जैसे उदाहरण के लिए पद्म पुराण में 4 प्रामाणिक संप्रदाय बताए जाते हैं: श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। बाकी संप्रदाय के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि वो कहाँ से आते हैं। And these 4 sampradayas are more recently known as Gaudiya Sampradaya, Pushtimarga Sampradaya, Ramanujacharya Sampradaya, Nimbarka Sampradaya. इन 4 संप्रदायों को आधुनिक समाज में इस तरह से जानते हैं: गौड़ीय संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय और निम्बार्काचार्य संप्रदाय। So Guru, Sadhu, Shastra, they're all saying essentially the same thing, but even then sometimes devotees disagree about what is the meaning. तो गुरु, साधु और शास्त्र ये तीनों हमेशा एक ही बात बताते हैं, परंतु तब भी कई बार भक्तों के बीच में ये अंतर आ जाता है कि कौन क्या बता रहा है। In such cases, Aitihyam can help to settle the disagreements. ऐसे समय पे ऐतिह्यम जो है वो इस तरीके का जो अंतर होता है उसको खत्म करने में मदद करता है। What was the conclusion of our predecessors? जो हमारे पहले के जो आचार्य हैं उन्होंने इस तथ्य के बारे में क्या सोचा था? How did they understand this problem? उन्होंने इस समस्या को कैसे समझा था? It's an appeal to tradition. और ये एक किस तरीके से परंपरा में समझा गया था? And in this case, tradition is itself implicitly recognized as another authority, a 4th authority. तो इस परिस्थिति में जो परंपरा है, जो लौकिक परंपरा है, वो अपने आप में एक चतुर्थ प्रमाण बन जाता है। Manusmriti goes so far as to say is that when there's any question of dharma, if you do whatever your predecessors did, then you will never go wrong. मनुस्मृति में यहाँ तक भी लिखा गया है कि जब भी धर्म की बात आती है तो आपके प्राचीन लोगों ने जो कार्य किया, अगर आप वो करते हैं तो वो धर्म में आ जाता है। So in these kinds of conflicts, we can sometimes find resolution through philosophy. तो इस प्रकार के जो मनमुटाव हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, कई बार हम सिद्धांत के द्वारा उसको समझ सकते हैं। That only helps when the problem is miscommunication or a clash of values. परंतु सिद्धांत के द्वारा समझना केवल तभी मददगार होता है जब वो लड़ाई जो है। It doesn't help when the conflict is based on competition over limited resources, envy. सिद्धांत तब कार्य नहीं करता है जबकि जो लड़ाई है वो ईर्ष्या पे आधारित हो। In those cases, we have to fall back on the
redeeming power of etiquette, Vaishnava etiquette, Shishtachara. तो उस अवस्था में जब ईर्ष्या होती है उस समय हमें वैष्णव सदाचार के तथ्य को समझना पड़ता है उस समस्या को सुलझाने के लिए. The ground rule of behind all ethical systems, or at least behind Vaishnava ethical systems, is humility. वैष्णव सदाचार या संसार के जितने भी शिष्टाचार के नियम हैं उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है विनम्रता. उसका आधार humility है. उन सारे सिद्धांतों का आधार विनम्रता माना जाता है. And Chaitanya Mahaprabhu's golden rule, you can say, is to be more humble than a blade of grass, more tolerant than a tree, ready to give respect to others, not expecting any in return. चैतन्य महाप्रभु का एक स्वर्णिम सिद्धांत है अपने आप को तृण से भी अधिक नीच समझना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील समझना और स्वयं के लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं करना और दूसरों को हमेशा सम्मान प्रदान करना. Sanatana Goswami goes so far as to say that prema, pure love of Godhead, is non-different from absolute and unconditional humility. सनातन गोस्वामी ने यहाँ तक भी कहा है कि भगवान का जो शुद्ध प्रेम है वो पूर्ण रूप से विनम्रता को ही भगवान का शुद्ध प्रेम कहा जा सकता है. Any system of etiquette anywhere in the world generally emphasizes the need for us to respect others. इस संसार में कोई भी जो शिष्टाचार के नियम होते हैं वो हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम दूसरे का सम्मान करेंगे. Sometimes we appeal to consequentialism. I don't know how you're going to translate that. What is the meaning for it? Consequentialism means what you want to do something that works, that's something that has a particular result. कई बार हम इसको इस तरह से समझते हैं कि हम कुछ कार्य करना चाहते हैं जिससे हमें कुछ उसका अनुभव और उसका कुछ उत्तर प्राप्त हो. It's result oriented resolution. जो उसका अनुपात बाद में जो उसका रिजल्ट आएगा उसके आधारित हम कुछ कार्य करना चाहते हैं. Sometimes we appeal to some law, and what if everybody in the world acted as I'm proposing that I should act? Would it be a better world? कई बार हम इस तरह से नियम देखते हैं कि अगर सभी लोग इस संसार में इसके लिए सहमत नहीं हैं तो फिर हम इसको कैसे कार्य करेंगे. But usually any ethical system will emphasize the need to treat other people in the same way that you expect to be treated yourself. परंतु संसार के जितने भी नैतिक सिद्धांत होते हैं वो इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि हमें दूसरे के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम दूसरों के द्वारा अपने लिए व्यवहार अपेक्षित करते हैं. In a world where everyone is considering himself or at least attempting to become the servant of others, where is the scope for conflict? एक ऐसे संसार में जहाँ पे सभी लोग स्वयं अपने आप को दूसरे के सेवक के समान समझते हैं तो उस संसार में कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती. So sometimes it becomes a little bit difficult in these ways. We have conflicts that are based on a right versus wrong sort of situation. कई बार संसार में ये कठिनाइयाँ आती हैं कि कुछ लड़ाई होती है अच्छे कार्य और बुरे कार्य के बीच में उसको समझने के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं. But what happens when you have a conflict that is based on different ideas about right? Then it becomes a right versus right conflict, and that's very difficult to deal with. कई बार कुछ लड़ाइयाँ होती हैं जब दोनों तथ्य सही होते हैं और दोनों तथ्य में सही होने के बाद भी कुछ न कुछ अंतर होता है तो ऐसी लड़ाइयों को समझाना या सुलह करना बहुत मुश्किल होता है. For example, one side argues that truth is the foremost thing that we should be aspiring for. जैसे एक तरफ कुछ लोग बोलते हैं कि सत्य जो है संसार में जो सच्चाई है सच बोलना है वो सबसे ऊंचे तरीके का धर्म है. And the other party says no, loyalty is more important than truth. दूसरा पक्ष जो है वो बताता है कि नहीं सत्य से भी बड़ा आज्ञाकारिता है इस संसार में. Similarly, is justice more important than mercy? This is another cause of conflict. इसी तरीके से एक और समस्या है कि न्याय सबसे ऊंचा है या कृपा सबसे ऊंचा है. What about the needs of an individual versus the needs of the community in which he lives? एक व्यक्ति के जीवन में उसकी क्या आवश्यकताएं हैं या जिस समाज में वो रहता है उसकी क्या आवश्यकताएं हैं ये भी एक समस्या आता है. And finally, what about the distinction between the immediate good, prayas,
and the ultimate good, shreyas. और जब दो के बीच में क्या चुनना चाहिए, एक तो श्रेयस मतलब जो कि अंत में अच्छा होगा, और दूसरा प्रेयस जो हमें तुरंत अच्छा दिखाई देता है. So the system of sadachar or shishtachara that we have received from our predecessor acharyas, it helps us to order society in such a way that these kinds of conflicts can be resolved with a minimal amount of friction. सदाचार या शिष्टाचार जो कि हमें परंपरा से प्राप्त होता है, उसका उपयोग करने से इस संसार की जो ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं आसानी से समाधान हो सकती हैं. This is why Rupa Goswami advises that those who want to attain Krishna consciousness should do 6 things. इसीलिए श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, जो भी कृष्ण भावना को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको 6 वस्तुएं करनी चाहिए. Always be enthusiastic. हमेशा उनको बहुत उत्साही रहना चाहिए. Always be determined. हमेशा उनको दृढ़ विश्वास से रहना चाहिए. Always be patient. बहुत धैर्यशाली भी रहना चाहिए. Always follow the rules and regulations very carefully. सारे नियम को बहुत ध्यान से पालन करना चाहिए. Always give up mundane association. भौतिक लोगों के संग को त्याग देना चाहिए. And act as per the examples given by your predecessor acharyas. और हमारे पुराने जो आचार्य हैं, उनके उदाहरण के अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए. This usually solves any kinds of difficulties among devotees or anyone who adopts the process. और ये जो सिद्धांत हैं, ये 6 तथ्य सभी के लिए कार्य करते हैं, भक्तों के लिए भी, और कोई भी व्यक्ति अगर इनको उपयोग करेगा तो उसके लिए कार्य करते हैं. Is it more important to respect a person for his spiritual advancement or his age? This is another question that we sometimes come. ये भी एक प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक उन्नति के आधार पर ज्यादा सम्मान करना चाहिए या उसकी आयु के आधार पर ज्यादा सम्मान करना चाहिए. Srila Prabhupada writes in Srimad Bhagavatam regarding Shukdev Goswami. He was only 16, but many elderly sages and acharyas were bowing at his lotus feet. श्री प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताते हैं, यद्यपि उनका उम्र केवल 16 साल था, परंतु बहुत उनकी उम्र से ज्यादा वाले लोग भी उनको सम्मान कर रहे थे. So this is another thing that we can consider. ये एक और तथ्य है जो कि हम सोच सकते हैं. So we have inherited a system of Vaishnava etiquette in which we try to respect everyone actually. वैष्णव सदाचार के सिद्धांत के आधार पे हम वास्तविकता में सभी को सम्मान करते हैं. Srila Bhaktivinoda Thakur in one of his Bengali songs, he says, "Shakale shamman korite shakti dehonata jatha jatha." That means, please give me the power to properly offer respect to all living entities, each according to his own position. भक्ति विनोद ठाकुर अपनी एक बंगाली कविता में बताते हैं, भगवान से इस तरह से प्रार्थना करते हैं, कृपया मुझे शक्ति दीजिए कि मैं हर प्रकार के व्यक्ति को उसके अधिकार के आधार पर सम्मान करना सीख सकूं. This tacitly recognizes that distinction is the foundation of bhakti. और ऐसा भक्ति शास्त्र में बताया भी जाता है कि इस तरीके से व्यक्ति को उसके अधिकार के आधार पर सम्मान करना शास्त्रों में लिखा हुआ है. And throughout our shastras we find examples of how Vaishnavas deal with other Vaishnavas. शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे हम समझ सकते हैं किस तरीके से एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के साथ संबंध रखते हैं. You look at how the kings respected the sages who would visit their palaces, for example. उदाहरण के लिए हम देखते हैं, पहले राजा जो थे उनके राज्य में जो भी साधु आते थे उनका सम्मान करते थे. In the Chaitanya Charitamrita, see how Chaitanya Mahaprabhu dealt with his godbrothers and even his elders as opposed to his servants and disciples. चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में देखते हैं चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु भाई और अपने जो सीनियर हैं उनसे कैसे व्यवहार करते थे और उनके जो जूनियर्स हैं जो उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करते थे. Whether you're looking in Bhagavatam or any other shastra, you will find the examples are plentiful how to interact with other devotees. चाहे आप श्रीमद् भागवतम में देखें और किसी भी शास्त्र में देखें, आपको बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि अलग-अलग भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए. Vedic culture simply means, and Vedic etiquette, Vaishnava etiquette, simply means to act in the ways that these examples from the Shastra have acted. वैष्णव सदाचार का एक बहुत आसान मतलब होता है
कि इस तरीके से कार्य करना चाहिए जिस तरीके से इन शास्त्रों में लोगों ने कार्य करके दिखाया। The reason Bhagavad Purana is called Bhagavad Purana is because it is about the Bhagavatas. The Bhagavatas being the devotees of the Lord. भागवत पुराण का नाम भागवत पुराण इसीलिए है क्योंकि ये इसमें बहुत सारे भागवत के बारे में बताया है। भागवत मतलब भगवान के जो भक्त होते हैं। To emphasize the importance of the devotees, Sanatana Goswami has written his book Brihad Bhagavata Amrita. Brihad Bhagavata Amrita. श्री सनातन गोस्वामी जी ने भक्तों का जो स्थिति है उसको बताने के लिए एक पूरा ग्रंथ लिखा है बृहद भागवत अमृत। So the International Society for Krishna Consciousness is a society intended to simply manifest in a social way this Vaishnava etiquette that we see among the dealings of Krishna and his Nitya Siddha associates. तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना जो है ये उन वैष्णव सदाचार को इस संसार में बताने के लिए कार्य करता है जो कि भगवान श्री कृष्ण और उनके पार्षदों के बीच के संबंध को बताते हैं। Or for that matter, in our books we also find examples of what not to do, persons that we should not emulate. They're also there in the Bhagavatam, just to instruct us. हमारे श्रीमद् भागवतम और ग्रंथों में बताया गया है, ऐसे ये भी बताया गया है कि किस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं कि जिनको हमें अनुसरण नहीं करना चाहिए। Whom should we emulate? Whom should we not emulate? Both instructions are there in these books. हमें किसका अनुसरण करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, ये दोनों वैदिक शास्त्रों में लिखे हुए हैं। But how are we going to take advantage of their examples unless we read these books? परंतु हम उन पुस्तकों के उदाहरणों को कैसे समझेंगे जब तक हम इन पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, even before he left this world in 1936 or 7, he was not entirely pleased with his disciples. He was actually very frustrated in many ways with the behavior of his disciples. श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस संसार को छोड़ने के पहले 1936 में हम देखते हैं कि वो अपने शिष्यों के व्यवहार से बहुत खुश नहीं थे। He had a vision in which he expanded all previous conceptions of how to apply Vaishnava principles in modern society. श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने कुशलता के आधार पे वैष्णव सिद्धांतों को इस आधुनिक समाज में किस तरीके से प्रयोग करना है ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। He created a nationwide, actually international society of Vaishnavas that embraced modernity as a tool for expanding Krishna consciousness in this world. He was very dynamic in that way. तो उन्होंने एक संस्था बनाई थी जो भारत देश में और भारत के बाहर में वो संस्था थी। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आधुनिक समाज में जो कार्य हैं उनके द्वारा वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे। But he was frustrated because his disciples became overwhelmed by the unprecedented amount of opulence that they suddenly found in their hands. परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत दुखी हुए ये देखकर कि उनके जो शिष्य थे वो संस्था में जो सम्मान और जो इज्जत मिलती थी उससे आकर्षित होकर भूल गए थे। His disciples began to think of building their own little empires within the institution. उनके जो शिष्य थे Cell phones off, please. मोबाइल को बंद रखिए, मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट रखना है। Sabhi cell phones go, please. तो उनके शिष्य जो थे वो उनकी संस्था के अंदर अपनी स्वयं की संस्था या अपना स्वयं का प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। Sometimes we see the tendency even in our own society. कई बार यही इच्छा या यही आदत हम अपनी संस्था के अंदर भी देखते हैं। So when he left this world, he was a little bit frustrated, and Prabhupada frankly said he was disgusted with his disciples. तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस संसार से गए तो वो कुछ दुखी थे और श्री प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अपने शिष्यों से दुखी थे। Srila Prabhupada, on the other hand, was generally pleased with his disciples and with the results of his preaching, even to foreign devotees that he created, unprecedented. श्री प्रभुपाद अपने शिष्यों से सामान्य रूप से प्रसन्न थे और यहाँ तक कि उन्होंने जो पाश्चात्य देशों के लोगों को जो प्रचार किया था उन अपने शिष्यों को देख के भी प्रभुपाद प्रसन्न थे। That is one distinction between Gaudiya Math and ISKCON.
गौड़े मठ विस्कोन के अंदर ये एक अंतर है। However, Srila Prabhupada, as far as I am aware, Srila Prabhupada criticized his disciples for just 2 or 3 things. जहाँ तक मुझे इस तरह से याद है कि श्री प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को केवल 2 या 3 वस्तुओं के ऊपर डांटा। Among those things, probably one of the most serious was that Srila Prabhupada used to repeatedly, often he said, "You people don't think that these books are meant for reading, you think that these books are only meant for distributing." उन 2-3 वस्तुओं में से सबसे महत्वपूर्ण एक तथ्य है जो कि श्री प्रभुपाद ने कई बार अपने शिष्यों से बोला। श्री प्रभुपाद बताते थे कि आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी जो पुस्तकें हैं ये केवल बांटने के लिए हैं, ये पढ़ने के लिए नहीं है। And Srila Prabhupada used to say he actually desired that all of his followers should read his books for 1 hour every day. श्री प्रभुपाद अपने सारे अनुयायी जो थे, इस्कॉन संस्था के सारे भक्तों से ये चाहते थे कि सभी लोग उनकी पुस्तकों को दिन में कम से कम 1 घंटा हर दिन पढ़ें। Based on my own personal experience and observation, I can frankly admit that in 2019 this problem is worse than it was when Srila Prabhupada was here. जहाँ तक प्रभुजी ने देखा है उनके अनुभव के आधार पे कि 2019 में ये समस्या और ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। इससे भी ज़्यादा गंभीर जब श्री प्रभुपाद इस संसार में थे, उससे ज़्यादा गंभीर अभी ये समस्या हो चुकी है। If we are not always dealing with one another in the highest adarsha, if we're not always dealing with each other according to Vaishnava etiquette, maybe the reason is that we're not hearing enough about Vaishnava etiquette. We're not seeing those examples in the sources that Srila Prabhupada so kindly provided for us. अगर हम अपने साथ में जो भक्त हैं उनसे बहुत उच्च आदर्श के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं, व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एक ये कारण भी है कि हम वैदिक शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि वैष्णव सदाचार कितना महत्वपूर्ण है। Maybe we're not reading those books because we think we already know what they say. हो सकता है हम उन पुस्तकों को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें कई बार लगता है कि हम तो पहले से ही जानते हैं कि पुस्तकों में क्या लिखा है। How many people here have ever tried to distribute some of Srila Prabhupada's books? Raise your hands. आप में से जिन लोगों ने भी श्री प्रभुपाद की पुस्तकों को वितरण करने की कोशिश की है, अपना हाथ उठाइए। How many people have encountered when you try to give someone one of Srila Prabhupada's books, they say, "Oh yes, Bhagavad Gita, we already know this." आप में से कितने लोग हैं जो अभी किसी को भगवद गीता देते हैं तो पहले से ही बोलता है कि मैं तो पहले से जानता हूँ भगवद गीता क्या है। We have the same problem. हमारे साथ भी यही समस्या है। This is why we're not reading. इसीलिए हम भगवद गीता नहीं पढ़ रहे हैं। And so if our culture is not formulated from the books that we are not reading, then what is it that is shaping our culture and our etiquette? अगर हमारा शिष्टाचार हमारी संस्था की पुस्तक या शास्त्रों से नहीं आया है तो किस जगह से हमारा शिष्टाचार आएगा? It can only be the influence of the parent society in which our ISKCON society is founded. अगर प्रभुपाद की पुस्तकों से ये नहीं आएगा तो इस संसार का जो समाज है उसी समाज के आधार से हम अपनी सोच को बनाएंगे। That's one thing. One of the other criticisms that Srila Prabhupada used to level was specifically aimed at his American disciples. इसके अलावा एक और तथ्य जिसको श्री प्रभुपाद अपने विशेष रूप से उनके अमेरिकी शिष्यों को बहुत डांटते थे। Americans, more than even the Europeans or anyone else, Americans. यूरोपियन और बाकी लोगों की अपेक्षा अमेरिकन जो शिष्य थे उनको प्रभुपाद इसके ऊपर डांटते थे। I can speak about this frankly because I'm an American. मैं इसके बारे में बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक अमेरिकन हूँ। Srila Prabhupada said, the American disease is that you always want to change everything. श्री प्रभुपाद बताते थे कि अमेरिकन लोगों की बीमारी है कि वो हमेशा हर चीज को बदलना चाहते हैं। Somehow or other, he said, under whatever it takes, just change things. That's what you have to do. प्रभुपाद बताते थे कि अमेरिकन लोग इस तरह से सोचते हैं कि कुछ भी हो हम वस्तुओं को बदलना है। He used to quote Bengali saying, "If you can stand on your hands and walk backward while clapping your feet, do it, but by all means change." हम इस तरह से
बंगाली भाषा में इस तरह से बताते थे कि अगर आप अपने पैर से चल सकते हैं और हाथ से ताली बजा सकते हैं तो करिए। हाँ, हाथ से चल सकते हैं, पैर से ताली बजा सकते हैं तो करिए, परंतु हर चीज को बदलने की आवश्यकता है। Now, those who have studied American religious history, they know that Americans can be very creative theologically. Theological creativity they have in abundance. आप में से जिन्होंने भी अमेरिका के पुराने इतिहास को देखा है, वो जानते हैं कि अमेरिकन लोग नई-नई वस्तुओं को ढूंढने में बहुत दक्ष होते हैं। Whenever you listen to the Americans, you have to keep this in mind. This history you have to keep in mind. जब भी आप अमेरिकन लोगों से व्यवहार करते हैं, तो ये इतिहास आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना होगा। Why? Because the Indians have caught this disease in a major way. क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों को भी ये बीमारी अभी लग चुकी है। The only disease that the Indians have more than this, I think, is the disease of infatuation with selfies. इस बीमारी से ज्यादा अगर कोई बीमारी है तो केवल ये है इंडियन भारतीय लोगों के बीच में सेल्फी का जो आदत है उनका। Once I was standing in Vrindavan in Guru Puja worshipping Srila Prabhupada. एक बार मैं वृंदावन में श्री प्रभुपाद की गुरु पूजा में खड़ा था। And suddenly the back of one man's head was about 2 inches away from my nose. और एक व्यक्ति का सिर का जो पिछला हिस्सा था वो मेरी नाक से केवल 2 इंच दूर था। It was a little bit abrupt, but I thought, let me try to be more tolerant than a tree. तो वो व्यक्ति बहुत पास में था, परंतु तब मैंने सोचा कि मुझे ये वृक्ष के समान सहनशीलता का उदाहरण अनुभव करना चाहिए। Then I noticed that he's holding a camera. तब मैंने देखा कि वो एक कैमरा लिए हुए था। And I thought, okay, he's come from I don't know how far away. He's only in Vrindavan for a few days. Let him take a picture of Srila Prabhupada. That's what we're here for. तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये व्यक्ति बहुत दूर से आया है, बहुत कम समय तक वृंदावन में रहेगा, तो इसको प्रभुपाद की पिक्चर लेने देना चाहिए। Then I noticed, because his cell phone was only 6 inches away from my nose, that the cell phone is not focused on Prabhupada, it's focused on himself with all the Western Vaishnavas in the background. तो उसके बाद मैंने देखा कि उसका जो मोबाइल था वो प्रभुपाद की तरफ फोकस नहीं था, उसके मोबाइल में वो खुद को आगे रख के उसके पीछे जो पाश्चात्य भक्त खड़े थे उनको देख रहा था। Then I got the attention of the security guard and pointed the man out. तब मैंने वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, उस व्यक्ति को बताया, उसको बाहर जाने के लिए बताया। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में फोटो खींचना सख्त मना है आजकल। Selfie, Vishesh Karshab selfie. So, but the point is serious, that the Indians, they have caught this disease that is changing everything now. परंतु ये बहुत गंभीर बात है कि भारतीयों को भी ये बीमारी अभी लग चुकी है कि हर वस्तु को बदलना है। Last night we heard that it only takes one generation of neglect and you can wipe out thousands of years of cumulative culture and spiritual attainment and scientific, intellectual, artistic achievement, all gone. कल रात में हमने देखा था कि केवल एक पीढ़ी अगर किसी वस्तु को छोड़ दे, नहीं करे, तो कई हजार सालों में जो हमने प्राप्त किया है आध्यात्मिक प्रगति या वैज्ञानिक प्रगति, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। If you're not very careful, you will become addicted to KFC. अगर आप बहुत सावधान नहीं हैं, KFC को आप उससे आकर्षित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। And you will forget that any such thing as sukriti ever existed. और अगर आप उससे बहुत आसक्त हो जाते हैं, तो सुकड़ी क्या चीज होती है आप कभी भी नहीं समझ सकते हैं। So this is the problem in modern India, that they want to change everything somehow or other. आधुनिक भारत में ये समस्या है कि वो हर वस्तु को किसी न किसी तरीके से बदलना चाहते हैं। In America they have a nice saying about this. अमेरिका में इसके बारे में एक कहावत भी है कि if it's not broken, don't fix it. कि अगर ये टूटा हुआ नहीं है तो इसको रिपेयर मत करिए। So Sanatana Dharma is not broken, it's Sanatana.
सनातन धर्म के तथ्य में हम देखते हैं कि सनातन धर्म कभी भी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा सनातन रहता है। Anytime you want to follow it, it works. आप कभी भी इस धर्म को पालन करना चाहते हैं, ये धर्म कार्य करता है। The problem is usually that we don't want to follow it. सामान्य समस्या होती है कि हम इस धर्म को पालन करना ही नहीं चाहते। So follow. What does it mean to follow something? किसी वस्तु को पालन करना या अनुसरण करना क्या कहलाता है? There are previously existing standards. They've been there forever. इसका मतलब होता है कि पहले से कुछ स्टैंडर्ड्स थे, कुछ मापक थे जिसको आपको अनुसरण करना है। Prabhuji asked me, he said sometimes it's confusing because we don't know what ISKCON was like when Srila Prabhupada was here, what kinds of conventions and standards he set in place. प्रभुजी से एक बार पूछा गया था कि हमें पता नहीं चलता है कि श्री प्रभुपाद के समय ISKCON संस्था में क्या-क्या सिद्धांत थे, क्या-क्या नियम थे, क्योंकि हमने उसको देखा नहीं है। And when we ask some of his disciples, they give different opinions according to their different outlook. और जब हम श्री प्रभुपाद जी के अलग-अलग शिष्यों से पूछते हैं, तो उनके शिष्य अलग-अलग वस्तुएं बताते हैं जिस तरीके से उन्होंने देखा है। One thing that I have to admit that I didn't have very much direct association with Srila Prabhupada, so I didn't get any direct personal training from him. एक तथ्य मुझे यहाँ बताना होगा कि मुझे श्री प्रभुपाद का प्रत्यक्ष शिक्षण बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं हुआ, तो श्री प्रभुपाद के प्रत्यक्ष प्रशिक्षण भी मुझे उस समय प्राप्त नहीं हुआ। But I was trained for about 20 years by the late Tamal Krishna Goswami. परंतु श्री श्रीमद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा मुझे करीब 20 साल तक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। And he probably received more personal training from Srila Prabhupada than anyone else in the movement. और शायद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी से जितना स्वाभाविक जितना पर्सनल प्रशिक्षण प्राप्त किया उतना और किसी ने प्राप्त नहीं किया होगा। So I can share my own recollection of what ISKCON was like in that late period. तो मैं ये बता सकता हूँ अपने खुद के अनुभव के आधार पे कि उस समय ISKCON किस तरह से था। I joined very late and very young. जब मैंने ISKCON संस्था में आया तो बहुत लेट था और मैं उस समय बहुत जवान था। But at that time, Srila Prabhupada was increasingly emphasizing the importance not only of Varnashram principles, but the vidhis that are traditional for Vaishnavas. उस समय श्री प्रभुपाद बहुत ज़्यादा बताते थे वर्णाश्रम धर्म के बारे में भी और विधियाँ, पारंपरिक विधियाँ जो कि वैष्णव समाज में होती हैं। Actually, this process began around 1970, especially when he acquired the Los Angeles temple, New Dwarka Dham. ये पद्धति प्रारंभ हुई 1970 के बाद जब श्री प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में न्यू द्वारका धाम मंदिर प्रारंभ किया। This was around 1970. 1970 के लगभग ये प्रारंभ हुआ। That was the first really solid establishment that Srila Prabhupada had to showcase our society and what he had achieved. ये लॉस एंजलिस में जो हुआ वो प्रभुपाद जी ने सबसे पहला आदर्श मंदिर बनाया पूरे समाज को, ISKCON समाज को बताने के लिए। And at that time, Prabhupada began very carefully training the devotees of ISKCON, because until that time they really had no cultural background, what to speak of at all, nothing. उस समय श्री प्रभुपाद ने ISKCON के जो भक्त थे उनको प्रशिक्षण देना बहुत अच्छा प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया, क्योंकि उसके पहले ISKCON के भक्तों का उतना ज़्यादा कुछ संस्कार या समाज के बारे में प्रशिक्षण नहीं था। They had no knowledge, they had no training, they had no good samskars, they had no understanding of very much. उनको कोई ज्ञान भी नहीं था, उनका प्रशिक्षण भी नहीं था, उनके पुराने संस्कार भी नहीं थे, इसलिए उसके पहले उनके पास उतना प्रशिक्षित नहीं थे। They had a lot of passion, a lot of ignorance, and a lot of immaturity. उनके पास बहुत रजोगुण था, बहुत तमोगुण था और बहुत अपरिपक्वता थी। But they also had a lot of faith. परंतु उनमें बहुत श्रद्धा भी था। And this is their saving grace. और ये बहुत महत्वपूर्ण था। One disciple of Radhanath Swami who takes care of his house and his childhood home in North America, he asked me this question: What is the difference between ISKCON now and ISKCON when Prabhupada was here? एक श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य जो कि अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने एक बार उससे पूछा कि
इस्कॉन में अभी का इस्कॉन और श्री प्रभुपाद के समय का जो इस्कॉन था उसमें क्या अंतर है? So I told him in those days nobody had any knowledge, nobody had any money, nobody had any maturity, nobody had any samskar. You know, they had no material assets, nothing at all. तो मैंने उस समय बताया कि उस समय लोग जो थे उनके पास संस्कार भी नहीं थे, ज्ञान भी नहीं था, पैसा भी उतना नहीं था और उतने परिपक्व भी नहीं थे. But they were so deeply impressed by Srila Prabhupada's character, mainly, that their faith was nearly absolute. परंतु उस समय वो श्री प्रभुपाद के चरित्र से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि श्री प्रभुपाद के ऊपर जो उनका श्रद्धा था वो बहुत उच्च अवस्था में था. This was in 2016 that he asked me this question. 2016 में उस भक्त ने मुझे ये प्रश्न पूछा था. So I told him now ISKCON has so much money, ISKCON has so much prestige, so many properties, so many devotees, highly educated people, highly qualified leaders, so many nice assets we have now. और उसने मुझे बताया कि अभी ISKCON के पास बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे शिक्षित भक्त भी हैं, बहुत धन भी है, बहुत अच्छे मंदिर भी हैं, तो बहुत सारी वस्तुएं अभी ISKCON के पास है. But I don't see the level of faith that I saw at that time. परंतु अभी भक्तों में मैं उतना श्रद्धा नहीं देखता हूँ जितना उस समय के भक्तों में श्रद्धा होता था. To give you an example, Srila Prabhupada and a few disciples were taking a train from Amritsar to Mumbai. एक उदाहरण देने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि श्री प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्य अमृतसर से मुंबई जाने के लिए एक ट्रेन में बैठे थे. Just a handful, a few disciples, not many. Guru Das and his wife were among them. बहुत कम भक्त थे. गुरुदास प्रभुजी और यमुना माता जी जो थे वो उनमें थे. So Srila Prabhupada, while they were on the train, he struck up a conversation with one gentleman in Hindi, which neither of those two could understand. जब वो लोग ट्रेन में थे तो श्री प्रभुपाद एक व्यक्ति से बातचीत करना चालू किए जो कि दिल्ली के थे और जो बातचीत हो रही थी वो ये दोनों नहीं समझ पा रहे थे. So the conversation was continuing for some time and Prabhupada seemed to be interested. और उस व्यक्ति के साथ प्रभुपाद जी कुछ समय तक बात करते रहे और प्रभुपाद को कुछ अच्छा लगा. Then finally Srila Prabhupada turned to Guru Das and told him, this man is living in a village in a couple of stops. He said, you just gather your luggage and get down with him at the next stop and start a temple in his city. तो श्री प्रभुपाद जी ने गुरु दास से बोला कि ये व्यक्ति जो है ये यहीं पास में रहता है, तो अभी आपको क्या करना है, अपना पूरा सामान लेके इसके साथ अगले स्टेशन पे उतर जाइए और जहाँ पे जाता है वहाँ पे एक मंदिर बनाना है. Complete stranger. ये व्यक्ति पूरी तरह से अजनबी था. A complete strange city that they've never been. और वो जो शहर था वो भी एकदम अजनबी शहर था. They don't speak the language. वो भाषा भी नहीं जानते थे. They have no money with them. उनके पास कुछ पैसा भी नहीं था. They were expecting a very nectarian train ride all the way to Mumbai with Srila Prabhupada. वो सोच रहे थे कि उनको श्री प्रभुपाद के साथ बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन में मुंबई तक जाने के लिए मिलेगा. What would you do? तो आप अगर होते तो क्या करते? If your guru asked you in this way. अगर आपके आध्यात्मिक गुरु आपसे इस तरह से पूछते तो आप क्या करते? Maybe you see my point. तब आपको मेरी ये बात समझ में आएगी. So I don't want to get too far off of the topic, but certain standards that I saw Srila Prabhupada had established, they have left me with this very strong impression that he was emphasizing increasingly not only Varnashram Dharma in general, but also Vaidhi Bhakti in particular. श्री प्रभुपाद के स्थापित सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांत जो मुझे बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान आते हैं. श्री प्रभुपाद उस समय वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते थे और उसके साथ साथ वैदिक भक्ति के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर प्रभुपाद बहुत फोकस करते थे. And after he got the new Dwarka temple, Srila Prabhupada said, now it is time to boil the milk. और न्यू द्वारका मंदिर, लॉस एंजलिस मंदिर मिलने के बाद श्री प्रभुपाद ने इस तरह से बताया कि अभी दूध को अच्छी तरीके से उबालने का समय आ गया है. What does it mean to boil the milk? दूध को उबालने से क्या आशय है? He meant to really, these people have come, they've joined ISKCON, they're committed to Krishna consciousness, now let us train them very carefully so that they become Pakka Vaishnavas. इससे ये मतलब है, प्रभुपाद जी ने बताया कि ये लोग भगवान कृष्ण की शरण में आए हैं, ISKCON संस्था में आए हैं और अभी ये समय है कि इनको बहुत अच्छे से प्रशिक्षण देके बहुत अच्छा वैष्णव भक्त बना सकें. That means understanding. What does it mean to act as a Vaishnava? उसका ये मतलब है ये समझना
कि वैष्णव का क्रियाकलाप किस तरह से होता है। Morning program was instituted at that time. उसी समय इस्कॉन संस्थान में जो प्रातःकालीन कार्यक्रम है वो भी प्रारंभ किया गया। The dress and the tilak, all these things came especially from that time. वैष्णव वेशभूषा, तिलक लगाने का तरीका सब कुछ उसी समय से प्रारंभ हुआ। And Srila Prabhupada got some degree, he trained us up. From that point on, he was emphasizing this need. और उस समय के बाद से श्री प्रभुपाद ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम लोगों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। Many detailed instructions he gave to various devotees. If you want to know these things, the easiest thing is to read through his letters and read his conversations. श्री प्रभुपाद जी ने इन सब तथ्य को बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से अपने कई शिष्यों को बताया। अगर हम उसको समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो श्री प्रभुपाद ने जो पत्र लिखे हैं और श्री प्रभुपाद के जो वार्तालाप है अपने शिष्यों से उनको पढ़ के समझ सकते हैं। We don't have time to get into too much detail. The details are infinite. हमारे पास अभी इतना पर्याप्त समय नहीं है कि हम उन सारी वस्तुओं को बहुत बड़े रूप में चर्चा कर सकें। But certain things Srila Prabhupada taught us. और श्री प्रभुपाद ने कुछ वस्तुएं हमें सिखाई। For example, he said that the temple should always have prasadam available to give to guests who arrive there. श्री प्रभुपाद ने एक बात बताया कि श्री मंदिर में हमेशा प्रसादम होना चाहिए और जो गेस्ट जो मंदिर में आते हैं उनको प्रसादम देना चाहिए। When Srila Prabhupada was staying for a short time in one of the mutts of his godbrother, he himself personally cooked for a very influential man who came to visit the temple on the spur of the moment. श्री प्रभुपाद जब अपने एक गुरु भाई के मठ में रुके हुए थे तो उन्होंने खुद कुछ लोग जो मंदिर में आने वाले थे उनके लिए प्रसादम बनाया। At that time the deities were taking rest. Srila Prabhupada still cooked and in his mind offered to the deity and then fed this gentleman prasadam and he was preaching in this way. उस समय उस मठ में जो विग्रह थे वो विग्रह शयन अवस्था में थे, विश्राम कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बनाया और मन में भगवान को भोग लगाया और उनके बाद जो लोग आए थे उनको प्रसाद दिया। Srila Prabhupada was very fond of prasadam. We'll talk about that tomorrow night. श्री प्रभुपाद प्रसादम के बारे में बहुत पसंद करते थे, बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। He generally, in those days, nobody wore hair among Prabhupada's disciples, among the men. उस समय श्री प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद के शिष्य जो पुरुष शिष्य थे उसमें से कोई भी बाल नहीं रखते थे सिर के ऊपर। He didn't like men to keep hair. प्रभुपाद जी को ये पसंद नहीं था कि लोगों के ऊपर लोग सिर पे बाल रखें। Women only wore saris. और जो स्त्रियां थीं वो केवल साड़ी पहनती थीं। Srila Prabhupada said women wearing pants is abominable. श्री प्रभुपाद बताते थे स्त्रियों का पैंट पहनना बहुत खराब माना जाता है। They tied their hair either in a long braid or in a bun. जो स्त्रियां थीं वो अपने बालों को भी बांध के रखती थीं। Just like Yashoda. जैसे यशोदा माँ। Once again, we're only talking about applying the principles and the practices that we read about in our scriptures at ground level here in this world as long as we are here. यहाँ भी हम यही बात कर रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों में जो पहले जो सिद्धांत हमने देखे हैं जिन लोगों के जीवन में वही हमें इस समाज में पालन करना है। In this way, by I don't want to say anukaranam, but by anusarana, we hope to go back to that place where everyone is acting like a Vaishnava, acting like a pure devotee of Krishna. तो इस तरह से उन लोगों का अनुसरण करके हम भी उसी जगह पे जा सकते हैं और वहाँ पे जो शुद्ध भक्त के जैसा क्रियाकलाप कर सकते हैं। One more thing I can say. One book distributor in Los Angeles, biggest book distributor in the temple, he told me something very interesting. एक और बात मैं बताना चाहूँगा। लॉस एंजलिस मंदिर में एक सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़े पुस्तक वितरक जो थे उन्होंने मुझे ये बताया था। He told me that every day he meets people who have already read Srila Prabhupada's books. वो बताते थे कि हर दिन मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो श्री प्रभुपाद की पुस्तक को पसंद करते हैं। And they have great admiration for Srila Prabhupada's books. उन्होंने श्री प्रभुपाद की पुस्तकों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान भी है। And so naturally the question he asks, why don't you join us? तो फिर वो ऐसे लोगों से मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि अगर आप इतना प्रभुपाद को पसंद करते हैं तो आप हमें क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं? He said he gets this answer fairly often. उन्होंने बताया कि जब वो ऐसा पूछते हैं तो उनको ये उत्तर मिलता है
they tell him that, well, we like what we read about in your books, but when we look at the way that you people live and the way that these books say that you should live, we see a difference. तो वो लोग इस तरह से बताते हैं कि हम इन पुस्तकों में जो लिखा है वो तो बहुत पसंद करते हैं, परंतु जब हम देखते हैं कि इन पुस्तकों में जो लिखा है वो आपके जीवन में आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमें अंतर दिखाई देता है. There's a word for that difference in English. Does anybody know what word I'm thinking of? अंग्रेजी भाषा में इसके लिए एक शब्द होता है, hypocrisy. 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 कपटता कहा जाता है. Okay, Krishna in Bhagavad Gita calls it mithyachara. Instead of shishtachara, you get mithyachara. You have a choice. So, in general, if we're looking for the example of how to deal with one another and how to deal with the outside world and also how to deal with the Supreme Personality of Godhead, practically, in specific, concrete, practical ways, you need only look as far as Srila Prabhupada's books. अगर हम ये समझना चाहते हैं कि अपने बीच में हमें कैसे व्यवहार करना है, बाहर के लोगों से कैसे व्यवहार करना है और भगवान के साथ हमें किस तरीके से व्यवहार करना है, तो हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को देखना होगा और उनको समझना होगा. But you have to take the austerity of knowledge, jnana tapasa, and you have to open those books and read them. आपको ज्ञान के रूप से तपस्या करनी होगी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी होगी, उसके लिए आपको प्रभुपाद जी की पुस्तकों को खोल के पढ़ना होगा. Or at least you can buy one of these little red things, you put the flash drive in it, and you can hear Srila Prabhupada all day long. और या तो आप उन पुस्तकों की ऑडियो फाइल्स ले सकते हैं या लेक्चर्स ले सकते हैं और आप उसको सुन सकते हैं. Do we have this thing in Gujarati yet? I don't know. Do you know about it? Tamil, they have it. Yeah. So anyway, the point is, well, there is one verse that Srila Prabhupada spoke from, one Bhagavad Gita verse that he lectured from more than any other verse. Does anyone know what it is? भगवद गीता के एक श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत बार कक्षा दिया है, क्या कोई जानता है उसके बारे में? Not dehinosmin yatha dehe, not sarva dharman paritijya, not even manmana bhava madbhakto, which Krishna says twice. Not chaturvarnyam. Not that one either. You're all wrong. No. Chapter 7, text number 1. Recite the verse. Tatshrinu, just hear. बताते हैं उस शब्द में तत्श्रृणु आता है, उसका मतलब है केवल सुनिए. If you want to understand me without any doubts and completely, Krishna says, just hear. कृष्ण बताते हैं कि अगर आप मेरे बारे में पूरी तरह से समझना चाहते हैं, बिना संशय के समझना चाहते हैं, तो केवल मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए. Now, we can go all night on this topic, so I have to end here. But about hearing, Srila Prabhupada said, hearing means acting. इस तथ्य के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो हम पूरी रात की चर्चा कर सकते हैं, परंतु हम छोटे में देखेंगे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं सुनना मतलब क्रियाकलाप भी करना. Yes, if we well, he said hearing that stops when the lecture ends, that is not hearing. श्री प्रभुपाद बताते हैं ऐसा श्रवण जो कि लेक्चर खत्म होने के बाद खत्म हो जाए वो श्रवण नहीं कहलाता है. Hearing means you have to apply what you've heard, then you realize it. श्रवण का मतलब होता है कि आपने जो सुना है उसको जिंदगी में उपयोग करना है, प्रयोग करना है, तभी आप उसको समझ पाएंगे. If Prabhupada says do this, don't do that, you have to follow. श्री प्रभुपाद बताते हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, तो हमें उसको अनुसरण करना होगा. So this is our mandate. We have to hear from Srila Prabhupada's books. I mentioned already that he criticized that we're not hearing enough, and the problem is even worse now than it is. Maybe that's where half of our problems come from. तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, हमें श्री प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना होगा.
चूँकि हम उन पुस्तकों को नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। If we just heard, half of our illusions would disappear, and therefore half of our problems would also disappear. अगर हम अच्छे से सुनेंगे तो हमारा जो इस संसार का भ्रम है वो अपने आप खत्म हो जाएगा और जो समस्याएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। Okay, so there's so much more to say, but we've run out of time, so I'm going to stop here unless anyone has any burning questions or doubts or comments about this. Yes. इस तथ्य में बहुत सारी चीजें बताने के लिए हैं, तो मैं यहाँ पे तो हमारे पास समय का मैं यहाँ पे बंद करूँगा। अगर किसी के पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। That he told that Sri Prabhupada mentioned many times about that shaving one's hair at least minimum once a month, but our serious advice is not to shave for the sake of preaching colleges. But when we read Prabhupada books, it's very difficult to follow. So how do you see that for the sake of preaching we have to keep the same hairstyle as the college students are keeping? So what do you think about the strategy? I'm not sure I follow what your question is. Can you state it simply? He asked the question that Sri Prabhupada mentioned that we should always shave our head. The hair should not be there. But many times for the sake of preaching when we go to the student community, so sometimes the senior says that totally if we don't have hair then students will not take it up like that. So sometimes we keep hair, so how it is in line is how to understand this difference. Should I translate in Hindi? Yes. एक प्रश्न ये है कि जैसे प्रभुजी ने कक्षा में बताया कि प्रभुपाद जी पसंद नहीं करते थे कि लोगों के सिर पे बाल होना चाहिए, पुरुष के सिर पे, परंतु कई बार प्रचार के लिए हम देखते हैं कि हम जब कभी प्रचार के लिए जाते हैं तो अगर सिर पे बाल नहीं होते हैं तो लोग उसको एप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम हमारे सीनियर्स हम बताते हैं कि सिर पे कुछ बाल होना चाहिए। तो इस तथ्य को हम कैसे समझ सकते हैं? Srila Prabhupada was not overly concerned about fanatically following rules and regulations. श्रील प्रभुपाद कभी भी नियमों को बहुत ही ज़्यादा सख्त, इन नियमों को बहुत ज़्यादा सख्त तरीके से पालन करने के लिए जोर नहीं देते थे। For example, he gave permission to his disciples, if it benefited their book distribution, that they could wear ordinary civilian clothing. जैसे उदाहरण के लिए श्री प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को एक बार बताया था कि अगर आपको पुस्तक वितरण में मदद मिलती है तो आप सामान्य लोगों के जो कपड़े हैं वो उस तरीके के कपड़े भी पहन सकते हैं। But at the time that he gave that permission, he also qualified, you must retain the Vaishnava tilak and the shikha. He insisted on that. पर जब श्री प्रभुपाद ने ये निर्देश दिया कि वो सामान्य वेशभूषा पहन सकते हैं, उस समय भी उन्होंने बताया कि उनको तिलक, वैष्णव तिलक रखना चाहिए और शिखा रखनी चाहिए। If that instruction is not sufficient to resolve your question, then you have to ask your spiritual master for his instructions and follow whatever he says. अगर ये निर्देश आपका जो प्रश्न है उसको प्रश्न को कोई तरह से उत्तर देने में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको अपने आध्यात्मिक गुरु से पूछना चाहिए और जो वो आदेश दें उसको अनुसरण कर सकते हैं। Is that okay? Yes. In front. Oh, sorry, in the back. Jorse. You told the point that a bit of neglect. A bit of neglect in one generation with regards to traditions and culture, it brings a big change in the whole tradition and culture. So we see that what Prabhupada told in his books, whether it's about material education, and when we told that it's just like slaughterhouse, but then we see in our own society that that same education is been taken either in our gurukuls or in our way of living is influenced by that way. That is, we are trying to adjust with the mundane society. So, how is this? How to see that through the vision of Prabhupada? Translate. ये प्रभुजी का प्रश्न है
कि जैसे कि आपने कक्षा में बताया कि अगर हम एक पीढ़ी में भी अगर ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत पुराने जो संस्कार हैं वो भी खत्म हो सकते हैं। तो जैसे श्री प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचनों में अपने जीवन में कई बार बताया, भौतिक शिक्षा जो है वो एक कसाई घर के समान है, ज्ञान को खत्म कर देती है। परंतु अभी हम देखते हैं कि हमारे इस संस्था या समाज के अंदर भी हम देखते हैं कि उसी भौतिक शिक्षा को हमारे गुरुकुलों में अनुमोदित किया जा रहा है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? My god brother Badrinarayan Swami told me something very interesting that Brahmananda Swami told him. तो प्रभुजी के जो गुरु भाई हैं बद्रीनारायण स्वामी महाराज, उन्होंने प्रभुजी को एक बात बताया था जो कि उनको ब्रह्मानंद स्वामी महाराज ने बताया था। Brahmananda Swami ने कहा कि when Ban Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's disciple, returned from his preaching in England unsuccessfully, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had called him back because he wasn't able to produce any result. He actually brought a sum of money with him that he had collected from his preaching. But he did not use that money. He did not give that money to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Instead, he founded the Ban Maharaj Institute of Oriental Philosophy in Vrindavan. तो वो ब्रह्मानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे बन महाराज। वो जब लंदन से वापस आए, उनको भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वापस बुला लिया था क्योंकि वो उनके प्रचार का कुछ फल वहाँ पे नहीं निकल रहा था। परंतु जब वो लंदन से आए तो उनके पास कुछ पैसा था, कुछ लक्ष्मी था। तो वो लक्ष्मी उन्होंने भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देने की बजाय वृंदावन में एक संस्था प्रारंभ किया, वन महाराज इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी, इस नाम से वृंदावन में एक संस्था प्रारंभ किया। And I'm not in a position to judge what his motivation for that project was, but Srila Prabhupada generally did not have a very high estimation of this particular personality. तो मैं इस प्रोजेक्ट को करते समय उनके मन में क्या था उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, परंतु सामान्यतः श्री प्रभुपाद के आधार पे इस प्रोजेक्ट या एक व्यक्ति के लिए उतना ज़्यादा महत्व नहीं था। Under the rhetoric of Yukta Vairagya or any other justification, when we try to engage in some so-called preaching and there is some admixture of selfish interest, it generally will fail. युक्त वैराग्य के आवरण पर्दे के अंदर अगर हम कुछ कार्य करना चाहते हैं और उस कार्य को करते समय हमारे मन में भी कुछ अलग इच्छाएं हैं, तो सामान्यतः वो कार्य जो है वो असफल सिद्ध होगा। Over the last several decades, I have watched this Ban Maharaj Institute of Oriental Philosophy gradually morph into different forms over the years. पिछले कुछ दशकों से मैंने देखा है कि ये वन महाराज का इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी जो इंस्टीट्यूट है वो अलग-अलग स्थितियों से गुजर रहा है। First it became the Ban Maharaj Institute of Oriental Philosophy and what was it? Management or something. पहले ये बना वन महाराज इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज एंड फिलॉसफीज and technology, I think it was. टेक्नोलॉजी। And then now they've dropped the philosophy altogether and it's only Ban Maharaj Institute of Management. और पहले ओरिएंटल फिलॉसफी था, उसके बाद उन्होंने वो फिलॉसफी पूरी तरह से हटा के अभी वो ओरिएंटल वन महाराज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बन गया है। In other words, since its inception was probably mundane to begin with, the result is only mundane. तो इससे छोटे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि प्रारंभ के समय ही उसका जो छोटा सा इच्छा था वो आध्यात्मिक नहीं था, इसलिए धीरे-धीरे वो पूरा प्रोजेक्ट भौतिक प्रोजेक्ट बन गया। Devotees approached Srila Prabhupada with the question of getting government accreditation for their gurukulas. एक बार भक्त श्री प्रभुपाद के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि उन जो इस्कॉन के गुरुकुल हैं उनके लिए सरकार की तरफ से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। And Srila Prabhupada emphatically insisted, no, don't do this. This is
drastic mistake. Do not do this. और श्रील प्रभुपाद ने उस समय उन शिष्यों से कहा, 3 बार कहा कि ये आपको नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा गलती है, इसको मत करिएगा। Tempted by prestige, tempted by money, tempted by whatever it is that tempts us. There's a very strong impetus to change Srila Prabhupada's instructions, but we cannot do that. पैसे के लिए या सम्मान के लिए या समाज की तरफ से जो दबाव होता है, उसके कारण से हमारे अंदर बहुत इच्छा होती है कि सामान्य जो प्रभुपाद के निर्देश हैं उनको हम बदलें, परंतु हमें उनको नहीं करना चाहिए। The result is that we slaughter our children. उसका ये परिणाम होता है कि हम अपने बच्चों का कत्ल कर देते हैं। It's not something that people like to hear all the time, but this is what Prabhupada said. He was very clear about this. These mundane educational institutions that do not emphasize the formation of character, they're no better than intellectual slaughterhouses. कई बार ये बात लोगों को अच्छा नहीं लगता है, पर श्री प्रभुपाद ने इसको स्पष्ट रूप से कहा है कि भौतिक शिक्षा जो कि बच्चों के चरित्र के निर्माण में मदद नहीं करती है, वो एक कसाई घर के समान है। And Srila Prabhupada very clearly said that the real purpose of education is to form character rather than to fill your head with data. श्री प्रभुपाद ने कई बार बताया कि शिक्षा का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। अपने सिर को, अपने दिमाग को केवल सूचनाओं से नहीं भरना चाहिए, चरित्र का निर्माण करना चाहिए। What kind of character is he talking about? श्री प्रभुपाद यहाँ पे किस प्रकार के चरित्र की बात कर रहे हैं? Matravat paradareshu paravasheshu ityadi. You understand the verse? प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं इस तरीके का चरित्र कि दूसरे की पत्नी को माता के समान देखना चाहिए, और उस श्लोक में जो दिया गया है। Yapashyati sa pandita. The person who sees like this, that person is educated. जो व्यक्ति इस तरह से देखता है, वो वास्तविकता में पंडित है। This is a very different goal in life. ये जीवन का बहुत अलग लक्ष्य है। Will it make you successful? A lot of money? हम बहुत सफल भी हो सकते हैं, बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। To ignore this distinction is to slaughter your children. परंतु इस निर्देश को नहीं समझना अपने बच्चों का आध्यात्मिक तरीके से कत्ल के समान है। Human life is only meant for advancement in spiritual life because this is a short window of opportunity that allows us to get to end suffering forever. Do we believe this? मनुष्य जीवन एक आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण मौका है, क्योंकि यही एक समय है जब हम आध्यात्मिक जीवन अपने आप को सफल करके आध्यात्मिक जीवन में सिद्ध हो सकते हैं। In Prabhupada's personal association, people believed this. श्रील प्रभुपाद के उनके संग में जो लोग थे, उनको इस पर विश्वास था। Therefore, I told this devotee in America, I don't see this kind of faith now. इसलिए मैंने अमेरिका में इस जो भक्त ने पूछा था उनको बताया कि मैं इस तरीके की श्रद्धा अभी लोगों में नहीं देखता हूँ। The capitulation to the mundane paradigm, as opposed to the Gurukula vision that Srila Prabhupada gave us, this is a prime example of what Jayadvaita Swami calls mission drift. ये इस तरीके से अभी का जो भौतिक समाज है उसके निर्देशों को मानना और उस श्रील प्रभुपाद के जो निर्देश थे उन निर्देशों से अलग जाना, इसी को जयद्वैत महाराज मतलब जो हमारा लक्ष्य था उससे भटक जाना कहते हैं। And we see that the result of schools in America, where they have abandoned the Gurukula vision, maybe a generation ago now, their children grow up not distinguishable from other American children. That you can't even tell they're devotees sometimes. और हम देखते हैं अमेरिका में गुरुकुल पद्धति जो शिक्षा थी उसको एक पीढ़ी पहले ही खत्म कर दिया गया था, तो भक्तों के जो बच्चे हैं और बाहर के लोगों के बच्चे हैं उनमें कुछ हम ज़्यादा अंतर नहीं देखते। If that's what you want, then go ahead and do it. अगर हम वही चाहते हैं तो हमें आगे जाके वो कर सकते हैं। But why waste your time and energy? Just send them to a mundane school and the effect will be the same. परंतु अगर हमें यही करना है तो फिर हमें इतना समय वेस्ट करने की क्या आवश्यकता है? भौतिक स्कूल में उनको भेज सकते हैं
और वहाँ से वो जो भी सीखेंगे। Don't call it a Gurukula. उसको गुरुकुल नहीं कहा जाना चाहिए। I don't think my answer could be more clear than this. मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत स्पष्ट उत्तर है। Anything else? Yes. What are the third thing Prabhupada criticized? He wants to know the third thing Prabhupada criticized. प्रश्न है कि कौन सी तीसरी वस्तु थी जिसके ऊपर प्रभुपाद ने बहुत निंदा की है। The third thing that I heard Prabhupada criticize is that you are not sufficiently afraid of Maya. जो मैंने प्रभुपाद के से सुना है, तीसरी वस्तु जिसके लिए प्रभुपाद डांटते थे कि आपको माया से पर्याप्त डर नहीं है। My brother used to say, some people are so naive that they don't see the train coming until they're flat underneath it. They don't see the train coming until they're flat underneath it. मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि कुछ लोग इतने भोले या इतने नादान रहते हैं कि वो ट्रेन को देख ही नहीं पाते हैं और ट्रेन के आने से वो मर जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं। And I have to say about modern India that especially young people in India, they have no idea of the threat of this so-called modern civilization that they have embraced from the West. They have no idea of its destructive nature. आधुनिक भारत के लोग, स्पेशली जो युवा वर्ग है, उसको देख के भी मुझे यही लगता है कि आधुनिक भारत के लोग जो पाश्चात्य देशों की सभ्यता को अपना रहे हैं, उनको इस सभ्यता के जो खतरे हैं उसके बारे में नहीं पता है। They only find out once they've already blown all their samskars. परंतु उनको तभी ये पता चलेगा जब उनके पास सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे। Srila Prabhupada, one day a disciple saw him praying very ardently in front of the deities. एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ने देखा कि श्रील प्रभुपाद विग्रह के सामने खड़े होकर बहुत ध्यान से प्रार्थना कर रहे थे। Somehow or other he mustered the courage to ask Srila Prabhupada what he was praying for. और कुछ करके उस शिष्य ने इतना साहस जुटाया कि प्रभुपाद से जाके पूछते हैं कि आप किस लिए प्रार्थना कर रहे थे। Prabhupada looked at him with a serious expression on his face and said, "I'm simply praying that I will not fall into Maya." श्री प्रभुपाद ने उस शिष्य को उत्तर दिया कि मैं केवल ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि कभी भी मैं माया में नहीं गिरूं। So this was the third thing that I heard Prabhupada criticize. तीसरी वस्तु थी जो मैंने सुनी कि श्री प्रभुपाद जिसकी निंदा करते थे। We don't read the books, we are not afraid of Maya, and we have, sorry? Yeah, we're too fond of changing things whimsically. हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, हमें माया से पर्याप्त भय नहीं है और हम वस्तुओं को बदलना चाहते हैं। So Shishtachara, if we follow the standard behavior that has been received since time immemorial, then we save ourselves from so much problem. The difficulty is we don't want to do that. शिष्टाचार इतना है कि हम परंपरा पहले से जो वस्तुएं चली आ रही हैं, अगर हम उसको अनुसरण करेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा, परंतु समस्या ये है कि हम उसको अनुसरण नहीं करना चाहते। We're somehow thinking that we can manage. You can't manage. हम सोचते हैं कि उसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा, परंतु ऐसा कभी भी नहीं होगा। All right, it's too late now. I'm sorry, we have to end. Anybody can speak to me personally if you have any other questions. अगर किसी को और कुछ प्रश्न है तो व्यक्तिगत रूप से प्रभुजी से मिलकर प्रश्न पूछ सकते हैं। This was supposed to be a 3-day seminar, but I'm going to stop here. Unless again there's some other questions. Tomorrow I'm thinking that we'll talk about a different topic which you have to come to find out what it is. 3 दिन का सेमिनार था, परंतु मैं अभी इसको रोक रहा हूँ। अगर किसी को कुछ प्रश्न होगा तो वो कल से जो है हम कुछ दूसरे बात पर चर्चा करेंगे। Once again, thank you very much to everyone for coming and for giving me this opportunity. All glories to Srila Prabhupada. श्रीमान मुकुंद प्रभु की जय, गुरु श्री प्रभुपाद गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। कल सुबह भी प्रभु जी का कक्षा रहेगा, सुबह 8 बजे
और कल शाम को इसी समय पे 7:15 पे प्रभुजी का लेक्चर रहेगा। तो मॉर्निंग 8 बजे और शाम को